बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का न्यू टॉपिक जो है ये थ्योरीज ऑफ इलास्टिक फ्लेयर स्टडी करेंगे हम आज। लेकिन पिछले 2 चैप्टर आप लोगों ने जो पढ़े थे, एक स्ट्रेन एनर्जी और एक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन वाले चैप्टर, उसकी 2 इक्वेशंस इस टॉपिक में यूज़ होंगी। वो आपको पिछला चैप्टर्स के इक्वेशंस का आइडिया होना चाहिए। मैं इधर वो जो है अभी बता देता हूँ आपको कौन सी इक्वेशंस हैं। इसमें स्ट्रेन एनर्जी वाली इक्वेशन जो है, यू स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर और 2E इंटू वॉल्यूम। अगर इसको पर यूनिट करें तो U इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर और 2E। ये इक्वेशन जो है ये थ्योरी ऑफ फ्लेयर में यूज़ होगी। इसके बाद जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की इक्वेशंस है वो ऑलरेडी हमने ड्राइव की थी। उसमें सिग्मा 1 इक्वल टू किस केस के लिए थी? एनालिटिकल मेथड फॉर स्ट्रेसेस ऑन एन ओब्लिक सेक्शन ऑफ ए बॉडी subjected to direct stresses in two mutually perpendicular directions accompanied by simple shear stress। और इसकी इक्वेशन थी सिग्मा 1 where sigma 1 is principal stress equal to sigma x plus sigma y over 2 plus 1 over 2 under root sigma x minus sigma y whole square plus 4q square। इसमें जो सिग्मा 1 है ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई नॉर्मल स्ट्रेसेस और डायरेक्ट स्ट्रेसेस एंड क्यू इज़ shear स्ट्रेस। तो इस फार्मूले को सेकंड फॉर्म में भी 1 और 2 को इनसाइड करके अगर इसको किया जाए तो ये ब्रैकेट इस अंडर रूट के अंदर आ जाएगा और इसकी वैल्यू जो है इस तरह हो जाएगी, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई और 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई और 2 होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये प्लस साइन के साथ होगा, माइनस साइन के साथ जो है इसमें ये माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा और बाकी जो है वो फार्मूला वही रहेगा। इसी तरह इसकी दूसरी फॉर्म जो है वो ये आ जाएगी। और ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या चीज़ है? ये प्रिंसिपल मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं और मैक्सिमम shear स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 और 2। अब इसकी जो डेफिनेशन देख लेते हैं, थ्योरीज ऑफ इलास्टिक फ्लेयर्स की डेफिनेशन क्या है? इसको अगर डिफाइन करें तो थ्योरीज ऑफ फ्लेयर्स आर दोज थ्योरीज विच हेल्प अस टू डिटरमिन द डायमेंशंस ऑफ मशीन कंपोनेंट्स व्हेन सब्जेक्टेड टू वेरियस लोड्स एक्टिंग ऑन इट ड्यूरिंग इट्स फंक्शनैलिटी। फॉर एग्जांपल्स, IC इंजन crankshaft, power transmission shaft, spindle of screw jaws or screw jacks, bolted and welded joints, सीलिंग फैन, रॉड। तो इसमें वेरियस थ्योरीज अप्लाई करके हम जो है इसकी डायमेंशन, शाफ्ट की डायमेंशन या उस पर shear स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ पैरामीटर्स मज़ीद इसके जो है जो इन्वॉल्व हैं थ्योरी ऑफ इलास्टिक फ्लेयर्स में। इसमें मसलन टेंसाइल टेस्ट, फ्लेयर्स और फ्लेयर थ्योरी और व्हाट आर द फ्लेयर क्राइटेरिया, इसको जो है डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो है सबसे पहले टेंसाइल टेस्ट हमने यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे किया हुआ है
और उसमें वैल्यूज़ ऑफ स्ट्रेसेस एट द यील्ड एंड एट द फ्रैक्चर हम जो है मालूम कर सकते हैं इन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे। इसी तरह व्हाट इज़ फ्लेयर, फ्लेयर जो है एट yielding of material or fracture of materials when the load is applied beyond its fracture or fail to fractures or yield. The flare criteria used to indicate the flare, and flare theories are the theory behind the flare criteria. स्ट्रेन एनर्जी, ये अभी मैंने जो आपको डिस्कस किया है, इसको जस्ट फार्मूला जो है हमने ड्राइव किया हुआ है और ये फार्मूला जो है यूज़ होगा। ये नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे U ओवर वॉल्यूम, U ओवर V इक्वल टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर ओवर E, वेयर सिग्मा इज स्ट्रेस, एंड in form of this triangle it is 1/2 sigma x square over E. So we can calculate the strain in various cases by this formula. Next, why we need flare theories? हम ये जो फ्लेयर थ्योरीज हमें कब इनकी रिक्वायरमेंट होती है और वाई वो नीड, तो इसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हम जो है जब कोई कंपोनेंट डिज़ाइन करते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट डिज़ाइन करते वक्त हम जो है उसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर सेफ वर्क और परमिसिबल स्ट्रेस। इसी तरह अगर कोई मटेरियल की डेवलपमेंट करनी हो और उसमें डायरेक्शनल स्ट्रेसेस निकालनी हो, उसकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ निकालनी हो, तो हम जो है इस थ्योरी की मदद से कैलकुलेट करते हैं डायरेक्शनल स्ट्रेसेस। नेक्स्ट, मोड्स ऑफ फ्लेयर। मोड्स ऑफ फ्लेयर क्या है? इसमें कब जो है कोई कंपोनेंट फेल होता है, तो इसमें यील्डिंग is the mode of flare. It's mean that when we apply a load and at certain limit the material is changing its position from or the material is plastically deformed or change its geometry. So this is the change of geometry or the plastic deformation is called yielding of material. The next is low stiffness. If stiffness of material is low, then excessive elastic deflection is there. Similarly, fracture, when materials or component is break, at that stress is called the fracture stress or fracture strength of the material. Buckling, the loss of stable equilibrium when excessive compressive load applied to the columns. ये ऑलरेडी हमने इसको कॉलम को स्टडी किया है और उसमें जो है हमें पता है कि बकलिंग लोड क्या होता है और बकलिंग किस वक्त डेवलप होती है। क्रीप फ्लेयर इज आल्सो temperature flare when due to temperature effect, high temperature, load carrying capacity drop and material fail due to high temperature. Next, different theories of flare. There are 5 different types of flares which are generally used. 5 types of theories which are generally used. A, maximum principal stress theory. It's also called
Rankine theory. This theory is used for brittle material. B is maximum shear stress theory, also called Tresca theory. This is used for ductile material. C is maximum principal strain Saint Venant theory. This is also used for ductile material. D. Total strain energy per unit volume or Hague theory. This is also used for ductile material. The last theory is shear strain energy per unit volume theory, von Mises and Henke. This theory is also used for ductile material. Out of these 5 theories, the maximum principal stress theory is only theory used for brittle material. All the other theories are used for ductile materials. These theories, in all these theories, we shall assume SYP or sigma YP stress at the yield point in the simple tensile test. It means that at which stress the material fail or yielding occur. So it's denoted by sigma YP or SYP. Similarly, the stresses sigma 1, sigma 2 or the sigma 2, sigma 3 are the principal stresses in these dimensional complex state of stress system in order of magnitude. We can also denote these stresses in terms of sigma 1, sigma 2, sigma 3. ये फार्मूला वही है जो अभी मैंने आपको बताया था चैप्टर 5 प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स. तो व्हाट इज़ फर्स्ट पहले हम डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज़ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी. इट इज़ आल्सो कॉल्ड Rankine's theory. According to this theory, the definition is according to this theory, flare of material will occur when the maximum principal stress in a complex stress system reaches the elastic limit stress. Elastic limit stress mean the ultimate stress in this case. In a simple tension, flare will occur. The equation is sigma 1 equal to sigma x plus sigma y over 2 plus 1 over 2 sigma x minus sigma y whole square plus 4 tau xy square equal to sigma yp. Sigma yp mean the stress at yield point. So in this equation we put tau xy equal to 0, shear stress when this principal stress is maximum, then shear stress will be 0. If we put this tau xy 0 and sigma y is equal to 0, then sigma 1 equal to the maximum stress will be equal to sigma yp. The stress, we also this called sigma maximum, or this is equal to sigma yp, mean stress at the yield point of the material as per above definitions. Next theory is maximum shear stress theory or Guest theory. This theory states that the flare can be assumed to occur when the maximum shear stress in the complex stress system is equal to the value of maximum shear stress in simple tension. इसका मतलब ये है कि सिंपल टेंशन जब हम ULT यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे
करते हैं तो उसमें जो टेंसाइल टेस्ट की जो रीडिंग है वो इक्वल टू हम करते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ स्ट्रेसेस। तो इसमें सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर प्लस tau x y square, in this case sigma y and sigma x will be 0, and here we can calculate 2txy equal to sigma yp or txy equal to sigma yp over 2. It's mean that the shear stress equal to 0.5 of yield stress. Next, the maximum principal strain theory. It is also called Saint-Venant theory. This theory assumes that flare occurs when the maximum strain for a complex state of stress system becomes equal to the strain at yield point in the tensile test for the three-dimensional complex state of stresses. And the formula is sigma 1 over E, where sigma 1 is principal stress over E is modulus of elasticity, minus gamma into sigma 2 over E minus gamma sigma 3 over E equal to sigma yp over E, where E is modulus of elasticity of material, and sigma 1, sigma 2, sigma 3 are the principal stresses. We also can write this equation in sigma 1 minus gamma into sigma 2 minus gamma into sigma 3 equal to sigma yp. Yp mean yield point, stress at yield point, and gamma or mu is the Poisson's ratio. We can also denote this by mu in some equations. The next theory is total strain energy theory or Haig's theory. The theory assumes that the flare occurs when the total strain energy for a complex state of stress system is equal to that of the yield point in a tensile test. Our formula for this theory is U equal to 1 over 2E into sigma 1 square plus sigma 2 square plus sigma 3 square minus 2 mu into sigma 1 sigma 2 plus sigma 2 sigma 3 plus sigma 3 sigma 1 bracket close equal to sigma square y over 2E. This is in terms of yield strength, and in third stress its formula is this sigma 1 square sigma 2 square sigma 3 square minus 2 mu into sigma 1 sigma 2 plus sigma 2 sigma 3 plus sigma 3 sigma 1 bracket close equal to sigma square sigma y square. This is stress at yield point. This equation is for 3D state of stress, and for 2D state of stress we assume sigma 3 will be equal to 0, and then the equation is for 2D state of stress is sigma 1 square plus sigma 2 square minus 2 mu sigma 1 sigma 2 equal to sigma y square. The next theory is the last theory, and this is shear strain energy theory, or it's also called distortion energy theory, or also called Mises-Henke or von Mises theory. This is also used for ductile materials. This theory states that the flare occurs when the maximum shear strain energy components for the complex state of stress system is equal to that the yield point in the tensile test.
The equation for this theory is sigma 1 minus sigma 2 whole square plus sigma 2 minus sigma 3 whole square plus sigma 3 minus sigma 1 whole square equal to 2 sigma square yp. Yp is yield point and sigma is stress, maximum stress. So this equation is used for in 3D state of stress. We also now discuss the examples relating to maximum shear stress theory and maximum distortion theory to solve the problem. The first problem is a shaft is loaded by a torque of 5 kilonewton meter. The material has a yield point of 350 megapascal. Find the required diameter using number 1 maximum shear stress theory, number 2 is maximum distortion energy theory. Take factor of safety equal to 2.5. So this formula is used from a torsional strength of shafts, or you have already studied this formula in Mechanics of Material 1 chapter on shaft torsional strength of shafts, and this formula is tau equal to 16t divided by pi dq, where value of t is torque is given in the problem, that is 5 kilonewton. 5 kilonewton is 5 into 10 power 3 newton per millimeter square. So using the maximum shear stress theory formula we already discussed, that is plus minus sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau square under root. If we put sigma x equal to sigma y equal to 0, mean that the normal stresses are 0, and then tau is equal to, tau will be calculated equal to 25.46 into 10 to the power 3 or d cube. If we equate this in maximum yield strength of the material, sigma y or 2 factor of safety, then it will be equal to sigma y is 350 into 10 to the power 6 megapascal divided by 2, and factor of safety is 2.5 given in the problem, and from this we can calculate the diameter of the shaft, that is 71.3 mm from this maximum shear stress theory. Maximum shear stress theory mean that the normal stress is sigma x sigma y equal to 0, only shear stress is maximum, and shear stress is maximum at 45 degree to the normal stress or principal stress, and from this theory we can calculate the dia is 71.3 mm. Then we calculate also dia from the maximum distortion energy theory. In this case sigma 1 will be taken as 25.46 into 10 to the power 3 or d cube, and A2 will be minus 25.46 10 to the power 3 or d cube. According to this formula we have already discussed this equation, and from this equation we can calculate, we can take in this equation sigma 3 equal to 0 because the stresses are biaxial. 2D equation will be applied, and substituting if we substitute the value of sigma 1 and sigma 2 with this equation and calculating for D, then we can calculate dia from this equation,
and that will be 68 millimeter. The next problem is the state of stress at a point for a material is shown in the figure. Find the factor of safety using A, maximum shear stress, in the problem, B, maximum distortion energy theory, take the tensile yield strength of the material as 400 MPa. This problem we will also calculate this using the factor of safety using the same equations, using the equation for maximum shear stress theory and maximum distortion energy theory. So first we calculate sigma 1 x sigma 2. It can be easily calculated from the Mohr circle, and from Mohr circle the sigma 1 will be 42.38 MPa, sigma 2 is minus 127.38 MPa. Using maximum shear stress theory, sigma 1 minus sigma 2 over 2 equal to sigma y over 2 Fs. Fs is given, so Fs we have to calculate Fs, and Fs is equal to, from this equation, Fs will be equal to 2.356, and then from second theory, maximum distortion energy theory, we can also calculate the factor of safety, and equation used is sigma 1 minus sigma 2 whole square minus sigma 2 minus sigma 3 whole square plus sigma 1 sigma 3 whole square equal to 2 y over 2 sigma y over Fs whole square, and from this sigma 3 is calculated as 2.613. So sigma Fs calculated in first maximum shear stress theory is less than this, so this is more safe. The calculation according to this theory is more safe than the maximum shear stress theory. This is all about for today's lecture. Thank you.